us now. And this is the information coming in as far as Jammu and Kashmir is concerned. Employees are to be shifted to safer places. What government sources are telling us. This was discussed during the meeting held in Srinagar today. The Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha had chaired a high-level meeting on the prevailing situation. We have Ishan joining us. Ishan, take us through what exactly is the situation in the wake of protests coming in from Kashmiri Hindus, with in fact them being virtually locked in, as they are saying, in their compounds where they reside. What really is the government going to do now? Well, ever since this fresh killing yesterday, there are protests which have broken out, and then government has been compelled to take certain decisions. Now, today there was a meeting which was chaired by Lieutenant Governor, in which several Kashmiri, these officials, from top police officials to administration, were part of that meeting, in which several key points were discussed. We are told that the governor has set a deadline of Monday, that is 6 June, to finalize and make arrangements for the Kashmiri Pandits to be moved to safer locations, and that has the deadline that has been, and to build the confidence among Kashmiri Pandit population who are right now protesting, agitated, and want to move out of Kashmir Valley. Senior officials have been directed to personally visit these Kashmiri Pandits so that they could inquire about what are their needs, what do they want, and what all could be done to make sure that they stay here and do not actually want to go out, because there's a larger fear among Kashmiri Pandit population now in Kashmir Valley that they might be next. So because 2 killings have taken place of minorities, and that is what is prompting them to think that they don't want to stay here and they don't want to work just as the cost of an employment, and that has forced them to take these decisions and completely, we saw today that there was a barricading done on certain colonies. Kashmiri Pandits were not allowed to come out, and we have also been told that DCs and SSPs have been told that assessment should be done of all those who have come under PM package, because several of them are still living in our rented accommodation, and that is irking them from a very long time, that these measures are immediately to be taken. Will these places be within Srinagar or the Kashmir Valley itself? Is there any information on that, Ishan? All right. Meanwhile, the husband of Rajni Bala, the teacher who was killed by terrorists, has slammed Jammu and Kashmir authorities. Listen in. मैं इसको ड्रॉप करके अपने स्कूल आ गया. अभी अटेंडेंस ही की थी मैंने, थोड़ी देर तो पीछे से फ़ोन आ गया मेरी हेडमास्टर को कि ऐसे ऐसे बात हो गई है. अब मेरी हेडमास्टर ने मुझे सुनाया नहीं, उसने कहा मेरी बेटी बीमार हो गई है, अपनी गाड़ी निकालो, फटाफट जाना है. मैंने गाड़ी निकाली, फटाफट टीचर भी बैठ गए 3-4 मेरे पास. हम जैसे ही वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बताया कि आपकी वाइफ को गोली लग गई. All right, let's go across to Mr. Ashok Pandit, filmmaker, who's joining us for more on the story. Mr. Pandit, the latest decision of the government to move members of minority community in the Kashmir Valley to safer locations. How do you look at this? The confidence-building measures also that are to be taken up to ensure that employees feel safe and secure is what the government has decided. There will be senior officials also visiting the employees for first-hand appraisal of the concerned issues. Your response to all these decisions that have been just taken by the Jammu and Kashmir government? After we have lost in last nearly 20 days, government comes up with this kind of a suggestion where we are going safer places. Now, let's identify these safer places. What safer places are you talking about? You see, the safer place now is anywhere except for Kashmir. So we have been demanding that the only solution to this is relocation to Jammu or any other areas of parts of the country. Kashmir is no more safe now. That has been decided, and that is very obvious, So let's not run around. SPs will come, SSs will come and meet us. We have crossed that stage now. We have lost trust in the bureaucracy of Kashmir, because these are the people who had fired tear gas shells on us. These are the people who had fired, water cannons on us. These are the people who locked us today behind in our colonies. All right. Mr. Pandit, please stay with us. We have with us on the phone line Amit Bhatt. He is the brother of Rahul Bhatt, the Jammu and Kashmir government employee who was slain just a few weeks ago. Amit Bhatt, your response to these decisions by the government, safer locations पे लेकर जाएंगे, immediately post करेंगे PM package employees और दूसरों को जो minority communities कश्मीर डिवीजन में posted हैं, और ये प्रोसेस मंडे 6 जून तक पूरी की
जाएगी, ऐसा निर्णय लिया है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा चेयर की गई मीटिंग में। क्या कहेंगे आप, क्या संतुष्ट हैं इस मूव से? सर ये तो क्या ही अच्छा कदम हम और क्या जी, और क्या डिमांड्स है, क्योंकि हम काफी समय से देख रहे हैं, पर्टिकुलरली कल की घटना के बाद जो कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी है वो प्रोटेस्ट कर रही है, कह रही है कि हम सेफ और सिक्योर नहीं है। क्या और कंसर्न्स हैं जिनको आपको लगता है इस सरकार को एड्रेस करने चाहिए? सर हर एक चीज जो सरकार के सिक्योरिटी के लिहाज से जरूरी है वो करना चाहिए। सरकार हर एक स्टेप उठाना चाहिए ताकि सिक्योर हो जाए बंदा। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित भट्ट जी। लेट्स लिसन टू आल्सो द स्टेटमेंट ऑफ राज कुमार हु इज bereaved. His wife in fact had just been shot yesterday. Rajni Bala, let's listen to what Raj Kumar had to say. अब आप कश्मीर वापस आएंगे, आप भी सर्व करते हैं वहाँ? नहीं, मैं नहीं जाना चाहता वापस। क्यों? क्योंकि मेरी छोटी सी गुड़िया है, 8th में पढ़ती है वो। अकेला उसको पाल नहीं सकता हूँ, ना वो मुझसे पलेगी। तो यहाँ मेरे बगैर वो नहीं रहेगी। अगर मैं उधर रहूँगा वो यहाँ नहीं रह सकती। कितना डर का माहौल है वहाँ? खतरा भी है। अगर मुझे भी कुछ हो जाए तो वो अकेली जान क्या करेगी फिर वो। मुझे एक बात बोली, आपने ट्रांसफर के लिए कभी कहा था? कहा था जब फर्स्ट टारगेट किलिंग हुई ना काकरण में, वो जहाँ उसका स्कूल है गोपालपुरा उसी के पास है, तभी मैं सीओ साहब के पास गया था एप्लीकेशन लेके कि वहाँ खतरा है। और मैडम भी कहती थी मुझे खतरा लगता है वहाँ जाने में। सब कुछ खुला है, ओपन स्कूल है वहाँ। क्या रिस्पॉन्स रहता था? कोई रिस्पॉन्स अच्छा था नहीं, उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया अच्छा उसने। क्या कहा? देखेंगे। फिर हम हफ्ते के बाद दोबारा जाते हैं, मैं और मैडम दोनों में। मैंने कहा सर एप्लीकेशन दी थी आपको हमने डिप्लॉयमेंट के लिए, वहाँ खतरा है, इसको डिप्लॉय कर दो कहीं सेफ जगह। उसने कहा नहीं कोई खतरा नहीं है आपको, जाओ आप स्कूल जाओ, अगर ज़्यादा किया तो और आगे भेज दूँगा। क्योंकि ये उसकी वर्डिंग थी। वो धमकी दी आपको? और आगे भेज दूँगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं ही जिम्मेवार हूँ उसकी मौत का। अगर वो मान जाता मेरी बात, उसके बाद भी मैं उसके घर गया हूँ, घर जाता हूँ सीईओ के किसी को लेके यार कर दो ट्रांसफर उसकी वहाँ से डिप्लॉयमेंट। वो भी कहता चलो सोचूंगा, लेकिन किया नहीं उसने। देखिए, जब राहुल भट्ट जी की हत्या हुई उसके बाद डिविजनल कमिश्नर की तरफ से एक ऑर्डर आया था कि सबको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ट्रांसफर किया जाए, उसके बावजूद उसे ट्रांसफर नहीं किया? नहीं किया उसने, एप्लीकेशन देने के बाद भी नहीं किया उन्होंने। इमीडिएटली यहाँ पोस्टिंग चाहता हूँ, इमीडिएटली यहाँ पोस्टिंग चाहता हूँ मैं, ताकि मैं उसको परवरिश कर सकूँ। सब कुछ लुट गया सर। एक दिन पहले ट्रांसफ़र हो गई होती तो सब कुछ था मेरे पास, आज कुछ नहीं।